Okay, so let us start with the adjustments. Okay, fine. Yeah, thanks, Vaibhavi. Yeah. So let us start with these adjustments. So an adjustments will have one, two, or three, or maximum four effects. Correct, na? Haan, minimum two effects, maximum four effects. Right? Yeah. So first, closing stock of raw material. So from this year onwards, closing stock of raw material, your stock will be categorized into three: raw material stock, WIP stock, and finished goods stock. Okay. So raw material stock, you can either show it on manufacturing debit side, or when we use the formula of raw material consumed, that time we can show it under raw material consumed. We can subtract it. Okay. So either of the way is preferable. You can use, yeah. I mean, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, जब आप डायरेक्ट मटेरियल डेबिट कर मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट करोगे, सो रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर्मूले में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा. ओके, फाइन. दिस इज द practical way, or you can show it manufacturing account credit side. Your wish. What do you want to show? I can show it to you from here. See this? Yeah. मैंने आपको ये सिखाया था, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये रहा आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या ये रहा. सो योर कैन यू सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? या, तो you can show it here, or you can write this side by raw material, I mean by closing stock of raw material here. Okay, either of the one, but I would prefer the first one. I will do it that way. Fine. Next, अगर WIP है तो it will go to manufacturing debit. Finished goods है so it will go to trading debit. Okay, and definitely the second effect will be balance sheet asset side. Okay, so is this clear to everyone? Is it clear to everyone? Yeah. So from this year onwards, you have to be very specific where you are taking your closing stock. Is it raw material stock? So you will subtract it from raw material consumed, manufacturing debit side, or you can show it manufacturing credit side. WIP closing stock, manufacturing debit. Finished goods closing stock, trading debit. And तीनों का second effect का आएगा balance sheet asset. Next, outstanding expenses. Okay, so if it is a manufacturing outstanding expense, you will add it to manufacturing debit. If it is office, then you will add it to admin expense debit, PNL debit. Selling and distribution, then you will add it to selling and distribution, PNL debit. और तीनों का सेकेंड इफेक्ट का आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर आता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी. सेकेंड इफेक्ट. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. if it is office expense prepaid, then PNL debit. Selling and distribution expense prepaid, then PNL debit. And ultimately the second effect will be balance sheet asset side. Okay, next, prepaid income. Prepaid income, prepaid, anything which is prepaid is always subtracted. Okay, don't forget that. Yeah, and uska second effect will be balance sheet liability. Prepaid expense is an asset, so prepaid income is a liability. Okay, and it will be on PNL account credit side. Outstanding income, income word आया है ना, so it will be PNL credit, and outstanding word use हुआ है, so it will be added. Okay, outstanding expense is a liability, so outstanding income will be a asset. Okay, yeah. Next, bad debts. So bad debts, PNL debit under the heading financial expense. Okay, I had already explained you what PNL account debit side में क्या होता है. Admin expenses होते हैं,
एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, और एक थर्ड क्राइटेरिया है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. व्हाट आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस पेड बाय द businessman for obtaining funds. Okay, yeah. And its second effect will be less from debtors balance sheet asset side. Okay, now RDD also same under financial expense, P&L debit less from debtors. And students, you can use this particular formula. See here, this is what you have been using since FIJC. So we can even use this. Okay, you can even go with this. I will prefer this particular formula which you all are used to. Correct? Yeah. And next, RFDD, again financial expense P&L debit. Now this year onwards, categorization is very important. Second effect, less from debtors, or you can go with this. Okay. Then RFDC creditors. Okay, it will be P&L credit, or you can use this. Okay, and second effect, less from creditors balance sheet liability. ठीक है? Yeah. I guess formulas आपको easy पड़ेगा because you all have been doing this since 11th standard ना, so you can relate to formulas better. Okay. Then interest on investments. इंटरेस्ट है ना, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुम्हारा इनकम है, तो P&L क्रेडिट. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड और ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स. इट इज अप टू यू. ओके, यू कैन गो बोथ द वेज. Depreciation. Now this year onwards, depreciation plays a very major role. अगर फैक्ट्री का एसेट पे डिप्रिसिएशन है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. ऑफिस के एसेट का डिप्रिसिएशन है तो P&L में जाएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसेट है तो P&L में जाएगा. ओके, या डोंट फॉरगेट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. एंड सेकेंड इफेक्ट, तीनों का सेकेंड इफेक्ट एक ही है, लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट. Okay, don't forget all these things. Make a note of all these things. Very important from examination point of view. Next, ये भी आप लोगों ने पहले से किया हुआ है. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो उसमें दो कैटेगरी होता है, इंश्योर्ड गुड्स एंड अनइंश्योर्ड गुड्स. राइट, अनइंश्योर्ड गुड्स है तो टू इफेक्ट्स. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. Okay, at what price? At the cost price of the goods. Okay, always remember students, trading account के credit side पे जो भी goods आप दिखाते हो going away from the business, okay, debit what comes in, credit what goes out, right? हाँ, so any goods that is going away from business in trading account is recorded at cost price, except sales. Sales is recorded at selling price. Okay, and second effect will be P&L debit, amount of loss. Am I clear about this? And if your goods are insured, then एक effect तुम्हारा और बढ़ जाएगा. There will be three effects: trading credit with the cost price, P&L debit with the loss value, and third effect will be balance sheet asset side with the claim amount, the claim that you receive from the insurance company. Okay, next, goods given away as free samples. It is as good as advertisement. Okay, हाँ, तुम्हारा पेन बनाने का बिजनेस है और तुमने 100 पेन बांट दिए, बराबर. हाँ, किधर बांटे? गणपति डोनेशन में. तुमने गणपति वाले आए थे चंदा लेने के लिए, तुमने उनको पैसे नहीं दिए, तुमने बोला ले लो हमारी तरफ से 100 पेन लेके चले जाओ. ओके, या, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड विद द कॉस्ट प्राइस and P&L debit because it is as good as advertisement.
Clear? Then drawings, that is goods withdrawn by the businessman. Trading credit with a cost price. And second effect, less from capital. Unrecorded purchases, add to purchase, add to creditors. ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, ये सब आप लोग ने किए हुए हैं, ऑलरेडी किया हुआ है, मैं सिर्फ ब्रश अप कर रही हूँ. Unrecorded sales, add to sales, add to debtors. Capital expenditure treated as revenue expenditure. Okay, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है ना. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो this was the reason why I made you all understand the concept of capital and revenue expenditure, because it is one of the adjustments in manufacturing final accounts. तो अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाती तो आपको ये सम्स में समझ में नहीं आता है इसका लॉजिक. ठीक है ना. तो अभी इधर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान दो. ओके, क्या किया गलती से बताती हूँ ये लोग ने. Capital expenditure treated as revenue expenditure. Okay, how you cannot treat capital expenditure as revenue, because एक asset है तो एक non recurring है तो एक recurring है. ठीक है. अभी क्या हुआ है, तो आई होप यू हैव डन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. यहाँ तो दिस इज रेक्टिफिकेशन. आपने क्या किया, गलती से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, मतलब गलती से उसको पीएनएल डेबिट किया, मतलब ऐड किया. तो अभी रेक्टिफाई करोगे तो माइनस करना पड़ेगा. यू हैव टू रेक्टिफाई ना, अपनी गलती की उसको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. So you will subtract it from the concerned expense, whether it is in manufacturing debit side or P&L debit side. Second effect, a capital expenditure का reflection किधर आता है final accounts में, asset में आता है. Okay, तो हमें उसका right effect दिखाना है कि it is balance sheet asset side. Okay, am I clear about this entry to everyone? Capital expenditure treated as revenue expenditure, one of the very important adjustments in manufacturing final accounts. Okay, then bills receivable dishonored. Okay, ये भी आपने किया होगा 11th या 12th में, bills of exchange में पढ़ा होगा. Yeah, तो bills receivable dishonored means what? To that extent bills will be subtracted, and to that extent debtors will increase. So add to debtors, add to bills receivable. Bills payable dishonored, same effect. Less from bills payable, add to creditors. Okay. Capital receipts treated as revenue receipts. Okay, ये भी rectification of errors है. कैपिटल रिसीप्ट को आपने गलती से रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट कर दिया. ठीक है, मतलब आपने इसको पीएनएल क्रेडिट किया, मतलब उधर ऐड किया. तो अभी आप इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, उल्टा इफेक्ट देके माइनस करके. तो लेस फ्रॉम द कंसर्न इनकम ऑन पीएनएल क्रेडिट साइड. ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट you can show it balance sheet liability, or you can subtract from a concerned asset depending on the case. वो तो हम सम में देखेंगे जब सम आएगा. Yeah, Anushka, I will. Don't worry. Okay. Profit on sale of asset. So P&L credit side, the profit value amount, and less from asset, the WDV of the asset. सेल हुआ है ना, तो टू दैट एक्सटेंट वो एसेट बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा, तो माइनस होएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेम पीएनएल डेबिट विद द लॉस अमाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी सेम, लेस फ्रॉम एसेट. ओके, these are adjustments already made in ट्रायल बैलेंस. तो एडजस्टमेंट्स जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं उसका एक ही इफेक्ट होता है. होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस. ओके, या
I'm not teaching anything new except capital receipts and revenue receipts, capital expenditures and revenue expenditures. Okay, they are regular adjustments which you have been doing since 2 years. So prepaid expenses, only one effect, balance sheet asset. Outstanding expenses, only one effect, balance sheet liability. Prepaid income, one effect, balance sheet liability. Outstanding income, one effect, balance sheet asset. Depreciation, one effect, P&L debit. Okay. Or students, agar factory related हुआ तो it can be manufacturing debit also. Okay. Yeah, please don't forget all these minute details. Closing stock, obviously balance sheet asset, and provision for depreciation, balance sheet liability. Now, anybody knows what is provision for depreciation? Anyone? Anyways, I will tell you what is the meaning of provision for depreciation, but anybody knows about provision for depreciation? Anyone knows what is provision for depreciation? Okay, Anushka is saying estimated value of depreciation. Okay, anyone? You all have done depreciation, right? In lower standards, 11th and 12th, right? या कोई CPT appear कर रहा होगा तो उसको पता होगा provision for depreciation. Anyone? जब depreciation है, depreciation के लिए provision बनाने की क्या जरूरत है? क्या? क्या P division? जब depreciation है, तो provision for depreciation की क्या जरूरत है? Okay, this is some new concept for you, Uchan. So I assume that nobody knows about it. So I'm just telling you. ध्यान दो जरा मैं जो बोल रही हूँ. So depreciation के आप लोग ने दो मेथड्स पढ़े. One is straight line and one is WDV. Correct? Yeah. But एक्चुअली डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स क्या है पता है? एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड. Okay, these are the two ways of recording depreciation. Sorry, I mean to say recording depreciation, and under both the methods you can record with straight line and WDV. Okay, anybody knew about this? ये पता है किसी को? Recording of depreciation के दो तरीके, one is the direct method and one is the indirect method. Direct method में भी you have two ways, two types of two methods of calculating depreciation, SLM and WDV. Okay, yeah. Now what happens is, आप लोग ने जो पढ़ा है जूनियर कॉलेज में वो ये है. You all have studied this. And जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, AS6, which talks about depreciation accounting, वो ये है. ओके, अभी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 स्क्रैप हो गया है. ICAI ने अभी इसको कंबाइन कर दिया है AS10 के साथ. AS10 इज व्हाट? फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग. ओके, तो अभी इसके साथ इसको मर्ज कर दिया है. करेक्ट? इट इज मर्ज्ड विद दिस. राइट? नाउ डायरेक्ट मेथड में व्हाट यू गाइस डू, आई विल टेल यू. Okay, pay attention to whatever I am saying.
Okay, now say if I have to apply depreciation by straight line method and my value of asset is say so say my value of my value of asset is say 5 lakhs. Okay, so 5 lakhs pe I have to give 10% depreciation, so every year it's gonna be 50,000. Okay, and say I'm going to use this asset for say 5 years. ठीक है, तो क्या होगा 50 50 50 50 1 2 3 4 5. Okay, 5 years. So when I will make my P&L account, so every year P&L में I will show depreciation 50K. Agreed? One, two, three, four, 5. Yeah. This is what you will be showing every year in P&L. Okay, and when you will make your asset account, that means when you will make the balance sheet, how will you show it? Same. Plant and machinery 5 lakhs less depreciation 50,000. Outer column 4 lakh 50. Then second year again 4 lakh 50. Okay, less depreciation 50,000. So outer column 4 lakhs, and like that you will do it for 5 years. Agreed everyone? This is what you do under the direct method, everyone. Right? This is what you guys do under the direct method. Yes. Correct? So what is the journal entry you pass for depreciation? We pass the journal entry depreciation account debit to asset account. Okay, and then we transfer this depreciation to P&L also. I hope you'll remember these steps. So this is what you do. Correct? So ये है आपका indirect method of depreciation. ठीक है, अभी indirect method को समझो. What is the indirect method of depreciation? So indirect method में when I say the word provision for depreciation, okay, तो क्या होता है ना इसमें, अब जैसे आपके डैड आपकी मम्मी को घर चलाने के लिए पैसे देते हैं, तो मम्मी उसमें से कुछ पैसा साइड में रखती है ताकि फ्यूचर में कभी कोई बड़ा खर्चा आए तो शी कैन यूज दैट पर्टिकुलर मनी फॉर मीटिंग दोज एक्सपेंसेस. करेक्ट? Similarly, under the indirect method of depreciation, what you do is, here I had given you an example of 50,000. Yeah. So here they take a provision of say 60. How much? 60,000. So like 60,000 5 साल तक. 60,000 till 5 years. 1 2 3 4 तो 5 years. Okay, so 60,000 5 years तक करोगे तो कितना आएगा? 3 lakhs. Correct? So every year you are saving 10,000. Your depreciation should be how much? 50. But how much you are providing? 60. That means every year 10,000 is saved. So like that 10,000 if you save for 5 years, so 50,000 you are able to save. ओके, तो क्या होगा 5 साल के बाद जब ये एसेट तुम्हारा यूज करके हो जाएगा तो यू विल नीड अ न्यू एसेट, एंड से एट दैट टाइम आपका ये एसेट 5 लाख से 6 लाख का हो गया, तो आपको कैश क्रंच होगा. बराबर? तो एटलीस्ट
5 लाख 6 लाख में से 50,000 आपके पास है ऑलरेडी जमा, तो 5 साल के बाद आपको सिर्फ कितने चाहिए? 5.5 लाख। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, वरना ऐसा बड़ा एग्जाम्पल देती तो आपको समझ में आता. Okay, so an indirect method does what? It helps you to create provision for depreciation so that after a certain point of time, when the life of the asset is zero, okay, your money which is kept aside can be used for pumping in, matlab for purchasing a new asset altogether. So what is the journal entry passed in this method, indirect method? So we pass the journal entry as depreciation to, not plant and machinery, but we pass depreciation account debit to provision for depreciation. Okay, so this is the entry what we pass, depreciation to provision for depreciation. Okay, और इसको हम कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में? ऐसे जब बैलेंस शीट बनती है तो इधर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे दिखता है सिर्फ, तो 5 साल तक प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा 5 लाख पे, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा लाइबिलिटी में. ओके, कितना दिखेगा? 60 ऐसे 5 इयर्स तक दिखता रहेगा. 60. Are you guys understanding whatever I'm saying? This is provision for depreciation. Okay, PNL में तो आप दिखाओगे ही, जब PNL अकाउंट बनाओगे इधर दिखेगा टू provision for depreciation. Okay, am I clear? समझ में आ रहा है everyone? P division. Okay, so understood वो last वाला adjustment. It's not an adjustment, it's an adjustment which is already there in the trial balance. तो इसलिए उसका एक ही इफेक्ट दिख रहा है. जब हम अगर उसको adjustments में करेंगे तो उसका 2 इफेक्ट दिखेगा. Okay, yeah. So what happens when you go for the provision for depreciation method, that is indirect method of depreciation, asset is recorded at its cost price. Okay, yeah, fine. So next lecture I'll start with a small application based sum. Fine students, okay? Yeah, no need to give attendance in the chat box, dear. Screenshot is already taken. Okay, dear? Everyone? Okay? Yeah. So let's meet in the next lecture.